No. We will discuss in this part of our lecture sea level curve, that what is sea level curve. We have discussed eustatic and relative sea level change in detail in our previous lectures. Today we are going to discuss the sea level curve, that what is sea level curve and how does we develop a sea level curve. A sea level curve is a simply graph with past sea level depth and our elevation plotted against the time. What is sea level curve? It is simply a graph along which or in which past sea level depth or elevation is plotted against the time. What is sea level curve? It is a graph with past sea level depth or height or elevation plotted against the time. So it shows, see, what does sea level curve shows? Sea level curve shows the relationship between the sea level depth of the past and the time. That what was sea level depth or sea level is elevation in particular period or at particular time. Or we may define sea level curve as it is the representation of the changes of sea level throughout the geological history. We may define sea level curve as a representation of the changes of the sea level throughout the geological history. By the geological history, we mean the earth history. It is a graph or it is a representation of sea level changes. You know that sea level changes constantly, and this change is continued since or from the start or from the creation of earth. Creation of earth के साथ साथ जो sea की creation हुई है, तो sea is constantly changing. Sometime it rises, sometime it falls, and this change, the representation of this change throughout the geological history is termed as sea level curve. Or in simple words, sea level curve tells us about the sea level in the past. That what was the sea level in particular time in the past or in particular period in the past. You know that sea level change is of two types. One is relative sea level change, while another is eustatic sea level change or eustacy. So in the same way, the sea level curves are also of two types. One is relative sea level curve, another is eustatic sea level curve. Relative sea level curve tells us about the relative sea level change that has occurred in the past or that has occurred throughout the geological history, while eustatic sea level curve tells us about the eustacy or the eustatic sea level change or global sea level change that has occurred throughout the geological history. Now, how does sea level curve has developed? You know that sea level change has been constant feature of the earth for billions of years. You know that the earth is almost 4 to 6 billion years old planet, and the sea level change is as old as the earth. And this sea level change affects not only the coastal processes, but it also affects both erosional and depositional features. Now, how does sea level change affect the erosional and depositional features? We have discussed in the system tracts, in the discussion of system tracts, in the discussion of sequence stratigraphic surfaces, that how does sea level change affects the coastal processes or the oceanic processes, and how does it cause erosion, and how does it cause deposition at some time. And this sea level change is due to the changing ocean water volume, that is glaciation, या तो ocean water volume की change की वजह से sea level change आता है, या due to changes in volume of water, या तो changes in ocean volumes, ocean के volume में change आ जाता है, जो ocean basin होता है, और ocean basin के volume में जो change आता है, that is due to the tectonics. And another cause is changes in the volume of water contained in the ocean.
Another cause is change or variation in the water volume present within the ocean, and this change in ocean water volume occurs due to the glaciation or global warming. It occurs due to the glacier और ocean volume में जो change आता है ocean basin volume, that is due to the tectonics. And this change of timing, the timing of this sea level change ranges from tens of thousands of years to over 100 million years. Magnitude also vary significantly, but may have been as great as 200 million years or more. Now you know that sea level change has particular duration. It has particular interval or it has particular scale. एक खास वक्त तक होता है या एक दौरानिये तक होता है. This duration or this timing या ये दौरानिया, it ranges from tens of thousands of years. It can be tens of years. It can be thousands of years, and it can be up to 100 million years, more than 100 million years. सैकड़ों मिलियन ईयर्स भी हो सकते हैं और हजारों साल भी इस सी लेवल चेंज का ड्यूरेशन हो सकता है. The sea level curve is the representation of the changes of the sea level throughout the geological history. Now, why do we need the understanding of the sea level change, or why do we need sea level curve? There are two important reasons, two important justifications that we need the understanding of sea level curve or sea level change in the geological history. Understanding sea level changes occurred in past help us in understanding paleo-oceanographic conditions. First significance of understanding sea level change is that its understanding or the understanding of sea level changes help us in understanding the paleoceanographic condition. It help us in understanding the oceanic conditions of the past. पास्ट में जो ओशन की कंडीशन है उनको अंडरस्टैंडिंग या उनको समझने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है सी लेवल चेंज को समझना. Another is that it affects organic productivity of the ocean. Sea level change, that is sea level rise and fall, have effects on the living organism present within the ocean. So it affects organic productivity of the ocean. Second is sediment distribution pattern along the continental margins and the interior basins. That you know that sea level fall has another, or it has distinct sediment distribution pattern than that of sea level rise. Sea level rise के दौरान जो सेडिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेडिमेंट की डिपोजिशन होती है, वो डिफरेंट होती है देन द सी लेवल फॉल. So understanding of sea level changes help us in understanding the sediment distribution pattern that has occurred along the continental margin as well as in the interior basin. Vail curve or Exon curve. This was the first sea level curve developed by the Peter Vail and his colleagues. The first such curve or the first sea level curve is the Vail curve or the Exon curve. और this एक्सॉन और एक्सॉन कर्व, जिसको एक्सॉन या वेल कर्व क्यों बोलते हैं या एक्सॉन कर्व क्यों बोलते हैं, it is the names of the curve refer to the fact that in 1977 a team of Exxon geologists from ESO production research headed by Peter Vail published monograph on global eustatic sea level changes. इसको वेल कर्व और एक्सॉन कर्व क्यों बोलते हैं? एक्सॉन इज पेट्रोलियम कंपनी. It is associated or it is related with the exploration and exploitation of petroleum. और इनमें जो कुछ जियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि यूस्टैटिक सी लेवल चेंज जो पास्ट में हो गई है, जो पास्ट में हुई है यूस्टैटिक सी लेवल चेंज, उसका एक कर्व बना लिया, एक ग्राफ बना लिया कि पास्ट में सी लेवल चेंज इस टाइम इस तरह था, इस टाइम फॉल था, इस टाइम राइज था, और कितना फॉल था और कितना राइज था. उन्होंने एक ग्लोबल यूस्टैटिक सी लेवल चेंजेस का एक कर्व बना लिया, एक ग्राफ बना लिया. इस वजह से इसी ग्राफ को फिर एक्सॉन कर्व या वेल कर्व बोलते हैं. और इन जियोलॉजिस्ट का जो हेड था
जो कमांड कर रहा था दैट वाज पीटर वेल। एंड आई एम होपफुल कि पीटर वेल का नाम आप लोगों ने इनिशियल जो लेक्चर्स थे हम उसको डिस्कस किया था when we were discussing the historical background of sequence stratigraphy। और इस जो कर्व उन्होंने बना लिया ये किस चीज के बेस पे था या किस डेटा के बेस पे था, वो तो एक्सॉन वाले करते ही पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करते हैं। सो दिस वाज बेस्ड ऑन द seismic and biostratigraphy data accumulated during the petroleum exploration। ये सी लेवल कर्व जो इन्होंने ड्रा किया था ये किस चीज पे बेस्ड था, दैट वाज बेस्ड ऑन द seismic and biostratigraphic data। जो एक्सप्लोरेशन के दौरान उनके पास डेटा आ रहा था उस डेटा को यकजा करके उसको कलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा उन्होंने पास्ट का यूस्टैटिक सी लेवल चेंज का एक कर्व बना लिया। और ये डेटा एक पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के दौरान उनके पास आया था। इस कंपनी के पास एक्सॉन का जो इंडस्ट्री जो कॉरपोरेशन है या कंपनी है उनके पास ये डेटा आया था। और इस डेटा को पीटर वेल और उसके कोलीग्स ने यकजा किया। ये इसके डेटा को बेस बना के जो पास्ट का सी लेवल चेंज था स्टैटिक सी लेवल चेंज उनका एक कर्व बना लिया है। लाइक यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज द ब्लू लाइंस द ब्लू graph shows the Exon sea level curve. This is Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian. We said that while definition के दौरान हमने कहा कि sea level curve क्या है, it is graph of sea level height or sea level elevation or change within the sea level elevation against the time और sea level change का जो relation तैयार करता है जो graph that is termed as sea level curve। and this is Exon sea level curve or Exon sea level curve। you can observe here that it sometimes rises, sometimes falls, sometimes rises and sometimes falls। and this is टाइम स्केल कैम्ब्रियन से लेकर न्यूजीन तक या जो प्लाइसीन प्लेस्टोसीन तक उन्होंने एक कर्व बना लिया एक डायग्राम की सूरत में या ग्राफ की सूरत में। पास्ट में जितनी भी स्टैटिक सी लेवल चेंज अकर हुए थे, यूस्टेसी हुई थी, पास्ट की यूस्टेसी का एक कर्व या ग्राफ बना लिया दैट इज टर्म्ड एज एक्सॉन सी लेवल कर्व और it is sometimes called as Vail sea level curve because the group which was preparing or which was studying or which was researching over this curve was headed by the or it was led by the Peter Vail। Peter Vail इसको head कर रहा था, इसको command कर रहा था। Now there are many objections over the Vail et al method और Vail sea level curve पे काफी ज्यादा objections है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो है that is lack of adequate corrections of local and regional subsidence and then thus potential error in estimating magnitude of sea level rise and fall। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन है उनका दीगर साइंटिस्ट का ये था कि जो लोकल यू नो दैट सी लेवल जो चेंज आ रहा होता है ये या तो अक्सर टेक्टोनिक्स की वजह से आ रहा होता है, टेक्टोनिक सब्सिडेंस या टेक्टोनिक्स जो अपलिफ्ट होता है इसकी वजह से आ रहा होता है या फिर ग्लेशियोस्टेसी की वजह से आ रहा होता है। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज दैट कि जो लोकल और रीजनल सब्सिडेंस थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री हुई है उनको उन्होंने एडिक्वेटली या उनको करेक्टली मालूम नहीं किया है और न उनको जो ज़रूरत थी करेक्शंस अप्लाई करने की वो अप्लाई नहीं की है जो रीजनल और लोकल सब्सिडेंस हुई है। और जब टेक्टोनिक्स को या सब्सिडेंस को सही तरीके से मालूम न किया हो तो फिर जो सी लेवल राइज और फॉल हुआ होगा ड्यू टू दैट टेक्टोनिक subsidence or uplift that will be also controversial or that will be also errorsome। वो भी उसमें भी एरर होगा। जब सब्सिडेंस के रेट में एरर होगा तो जो आप पास्ट का सी लेवल फॉल या राइज मालूम कर रहे हो that will be also containing the errors or that will be also not
एग्जैक्ट आर नॉट कंफर्म उसका वो सी लेवल एस्टिमेट नहीं होगी. Second was need for updating the sea level curves in view of recent refinements of time scale. जो टाइम स्केल होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज विद पैसेज ऑफ टाइम न्यू डिस्कवरीज और न्यू फॉसिल्स और न्यू एजेस डिस्कवर होते रहते हैं और उसको फिर अकॉर्डिंगली रिफाइन किया जाता है या अपडेट किया जाता है. लेकिन सी लेवल कर्व को अपडेट इस तरह जो चाहिए था टाइम स्केल के रिसेंट जो चेंजेस टाइम स्केल में आई हुई थी उसके साथ टेली नहीं कर रहा था, उसके साथ अपडेट नहीं था, उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं था. Third was the non-publication of supporting evidence, much of which was considered proprietary. It was based on जो third objection था, and this was main objection, that was of non-publication of the third main objection or criticism on Vail curve was non-publication of supporting evidence, much of which was considered proprietary. It was based on undisclosed, commercially confidential stratigraphic data and hence not independently verifiable. रिमेंबर जो भी हम रिसर्च करते हैं दैट रिसर्च मस्ट बी, जो भी रिसर्च करते हैं और जिस रिसर्च पे हम बेस करते हैं जिसको हम बेसिस बनाते हैं दैट रिसर्च मस्ट बी पब्लिश. वो इंटरनेशनली या नेशनली जो जर्नल्स होते हैं या जो मैगजीन्स होते हैं उनमें पब्लिश होने चाहिए, वो पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए. बट जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाले होते हैं या पेट्रोलियम कंपनी जो एक्सप्लोरेशन करते हैं वो जो डेटा लेते हैं वो डेटा मुफ्त में नहीं लेते, उनका खर्च आया होता है, उनके एक्सपेंडिचर कास्ट उन्होंने कास्ट लगाई होती है, तो इस वजह से वो अक्सर कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. और बाकी दूसरी बात यह है कि जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं नेशनल रिसोर्सेज उसका डेटा हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करते और न कर सकते हो. तो ये जो डेटा उन्होंने यूज किया था वेल और उसके कोलीग्स ने, दैट वाज कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो हर किसी को अवेलेबल नहीं था. जब हर किसी को अवेलेबल नहीं था तो हर कोई उसको सही नहीं समझ सकता था और न उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता था, बिकॉज दैट वाज कमर्शियली अनडिस्क्लोज्ड and confidential stratigraphic data that was owned or that was present only with the Exxon जो Exxon Corporation है या organization है उनके पास अवेलेबल थी और उनको उन्होंने बेस बनाया था. So there was need कि एक तो जो सी लेवल कर्व है वो जो टाइम स्केल्स में चेंजेस आई हुई है विद पैसेज ऑफ टाइम उसके साथ अपडेट हो, उसी के साथ को रिलेट हो या उसी